watching me on my YouTube channel. Today I am going to teach you question number 3 from the exercise 8.1, question number 3rd, chapter Introduction to Trigonometry. The question is, if sin A is equals to 3 upon 4, then find cos A and tan A. Okay. So first we have to draw a triangle. ऐसे उसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन ऐसे समझने के लिए आप इसे ड्रॉ कर सकते हो. सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ABC. Measure of angle B is equals to what? 90 degree. The value of sin A is equals to 3 upon 4. We know that the sine ratio is equals to opposite side upon what? Hypotenuse. Now suppose this is angle A. The opposite side of angle A is equals to what? BC, and hypotenuse is EC. बराबर है. So let the common multiple be x. Why? Because we have the sine ratio. Sin A is equals to 3 upon 4. 3 upon 4 is a ratio, not a values. 3 upon 4 is a ratio. वो साइड के वैल्यूज नहीं, लेकिन उनका क्या है, वो रेशियो है. सो इसलिए मैंने सबसे पहले लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी x. Therefore sin A is equals to 3 upon 4. Sin A is equals to 3 upon 4. This is given things. But we know that the sine ratio, sine is equals to what? Opposite side upon a hypotenuse. This is equals to opposite side of the angle A. This is BC. BC upon what? Hypotenuse is AC. Then we get the value of BC. BC is equals to 3, but common multiple is x. Therefore BC is equals to 3x, and AC is equals to what? 4x. Actually यहाँ पे आपको x नहीं भी लिया तो भी चलता है, लेकिन वो रेशियो है. 3 and 4 are not value, these are the ratio. Therefore हमने यहाँ पे x ले लिया. So BC is equals to 3x and this is a 4x. Now हमें फाइंड करना था cos A and tan A. We know the cos ratio. Cos ratio is equals to what? Adjacent side upon hypotenuse. The cos A is equals to adjacent side of angle A, और वो है आपकी AB. तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉमन मल्टीपल को x कंसीडर करना पड़ा. BC की वैल्यू निकालनी पड़ी और AC की वैल्यू. अब यहाँ पे BC आपको 3x मिल गया. AC इज इक्वल्स टू आपके पास 4x है. अब अगर मुझे AB फाइंड करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem is the square in a right angle triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. The square of the hypotenuse means AC square. This is AC square is equals to AB square plus what? BC square. Therefore, the value of AC is equals to 4x. 4x square is equal to AB square as it is AB square. BC is equals to what? 3x bracket square. Then we get 16x square is equals to AB square plus what? 9x square. Now find the value of AB square. Now here 9x square is positive. After transposing to the LHS, the plus 9x square becomes minus. Then we get 16x square minus 9x square is equals to what? AB square. बराबर है. Now the value of AB square is equals to 16 minus 9 is equals to what? 7x square. Now taking square root on both sides, so AB is equals to 7 is not a perfect square, इसलिए वो रूट में रहेगा. Root of 7 and if the square root of x square is x, then we get AB is equals to root of 7x. Now AB is equals to root of 7x. Now find the value of cos A and the value of tan A. Then the value of cos A. Cos A means what? Cos theta. The value of cos theta is equals to
एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. अब एंगल कौन सा है आपका A. नाउ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A इज AB and hypotenuse is AC. Now this is AB upon AC. The value of AB is equals to root of 7x upon AC is equals to 4x. Now here multiply x, divide x, both are cancelled. Then we get the value is root of 7 upon 4 is the value of cos A. आप ये फर्स्ट आंसर बन गया. cos A is equals to root of 7 upon 4. Now second value is tan A. The value of tan theta. Tan theta is equals to tan ratio opposite side of angle theta upon adjacent side of the angle theta. आपके पास एंगल है A. So opposite side of angle A is BC and adjacent side of angle A is AB. Then the ratio is BC upon what? AB. But the value of BC is equals to 3x. And the AB is equals to root of 7x. Now here same, multiply, divide, both are cancel out. Then we get tan A. Tan A is equals to 3 upon root of 7. This is the answer. Of cos A is equals to root of 7 upon 4 and tan A is equals to 3 upon root of 7. Now the question number 4. The question 4 is given that 15 cot A is equals to what? 8. Then find the value of sin A and tan A. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? सॉल्व करना है. यहाँ पर भी हम अलग से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स. देन ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, अनदर ट्रायंगल ABC. आपको एक्चुअल मेजर नहीं लेना, खाली कंसिडर करना है. ABC is a right angle triangle, right angle at B. We have the value of cot 15 cot A. Now 15 cot A is equals to 8. That is given thing. आप यहाँ पे लिख सकते हो given. Now 15 cot A is equals to 18. Now 15 here multiply to the cot A. यहाँ पे कोई साइन है तो क्या रहेगा? Multiply. 15 is multiplied to the cot A after transposing to 50 to the RHS. Now multiply 15 becomes what? Divide. Then we get the value of cot A. Cot A is equals to 8 upon what? 15. This is a ratio. अब cot A की वैल्यू आपको मिली 8 upon 15. 8 upon 15 is the ratio. अगर cot का हिसाब करें तो the ratio of cot की वैल्यू होती है adjacent side of angle theta upon opposite side of angle theta. आपके पास एंगल कौन सा है? A. तो अब आप बोल सकते हो cot A means what? adjacent side of angle A. So A की adjacent side यहाँ पे आएगी आपकी AB. AB is the adjacent side and opposite side क्या रहेगी आपकी BC. BC is the opposite side. हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा आपका AC. बराबर है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एडजेसेंट साइड क्या मिल गया आपको? अपोजिट साइड. लेकिन ये क्या है? रेशियो है. बराबर है. सो 8 इज नॉट अ वैल्यू, 15 इज नॉट अ, वो रेशियो है. तो हमें यहाँ पे वापिस करना पड़ेगा कॉमन मल्टीपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. सेम यहाँ पे रहेगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. If common multiple bx, the value of cot A is equals to 8 upon 15, but we know that the value of cot theta, adjacent side of angle A upon what? Opposite side. So adjacent side is AB. AB upon what? Opposite side is the BC. Then we get the value of AB. AB is equals to 8 into common multiple x. So AB is equals to what? 8x. And BC is equals to what? 15x. ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा. नाउ हमें फाइंड करनी थी वैल्यू साइन ए एंड टैन ए. साइन रेशियो है आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन व्हाट? हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? AC. और AC इज नॉट गिवन हमारे पास. तो ये बन गया आपकी 8x और ये बन गया आपकी 15x. हमें फाइंड करना था AC. ABC is a right angle triangle. Again by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, we get the value of AC. But how? By using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Square of the hypotenuse means AC square
is equals to AB square plus what? BC square. Now find the value of AC square. So AC square as it is. AC square is equals to AB square. AB is equals to 8x. 8x bracket square plus what? BC. BC is equals to 15x square. Then we get the value of 8. 8 square is equals to 64 and x square is equals to x square as it is. 15 square is equals to 225 x square is equals to, now sum of the 64x square and 225x square both are the like terms. बोथ आर द लाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पर भी कोएफिशिएंट आपका x स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका वेरिएबल x स्क्वायर आ गया, तो दोनों क्या बन गया? लाइक टर्म. लाइक टर्म क्या होगी? एडिशन. एडिशन करने के बाद 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9, 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड 289 x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर. बराबर. लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी AC की, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. Now taking square root on both sides, then we get AC. AC is equals to 17x. This is the value of AC. आप यहाँ पे लिख सकते हो. This is 17x. Okay. Now find the value of sin A. तो हम सबसे पहले find करेंगे sin value. Sin A is equal to, we know that the sin ratio opposite side upon hypotenuse. A बोला है इसलिए opposite side of angle A is a BC, hypotenuse is AC. So sin A is equals to what? BC upon AC. Now the value of BC is equals to what? 15x upon 17x. Now x will be cancelled out. Now it is 15 upon what? 17. This is the value of sin A. Now अब वैल्यू फाइंड करने हमें sec A. Now sec A is equals to the value of sec theta. Sec theta is equals to hypotenuse upon adjacent side. Now sec A is equals to hypotenuse AC upon adjacent side of angle A is a AB. So hypotenuse is equals to AC upon what? AB. The value of AC is equals to 17x upon AB is equals to 8x. Now x will be cancelled out. This is 17 upon x 8. This is the answer of sec A.